Good morning, students. Welcome to your Mathema classes by Purnima ma'am. Today I am going to explain the topic arithmetic progression of class 10. Okay, students, what is our learning points? Learning point is it's the introduction of AP, how we identify the sequence and its notation. Students, everything have a two aspects of learnings. First one is the specific and second one is the general. In a specific, we what we learn right now, that is this specific objectives, and where we used it is its general objective. Okay, students, for this concept I am going to explain it through an activity. Take as a sequence of 1 2 3 4 5. This sequence ended here at 5, and here I am taking 1 2 3 4 5, so on, increases. That means a sequence which end at 5, that is known as a finite sequence, and the sequence which is going on, that is the infinite sequence. In another step, in second equation, second expansion, I am taking a 5 4 3 2 1, and the reverse of it, that is 5 4 3 2 1, go so on. Another is 1 2 4 5 7 11, or so on. Here I am identifying which sequence is in AP and which sequence is not in AP. What is the requirement of it? Okay, students, now I am going to explain these things. Let's see. We have a sequence is 1 2 3 4 5. Okay, we arrange. This is the one candy. Okay, students. In the next, we have two candies. We put two candy. In the next step, we put three candies. In the next step, we put four candies. Okay, students. And the next step, we put five candies. Now here what we see, in the first is one candy, second the difference of one. What is the difference between first to second? One candy. Difference between first to third step, that is 2. Here is the candy, we presented 2C. Here is the one candy, that is 1C. One candy, that is 1C. C is the representative of candy. Now here is, in this step, what we have? The difference is 3 candies. Difference from the 1 to 4th step, here is the 3 candies difference. Now students, see here. So in this one, what we write? Here is our differences. In the first step, our difference is 0. But in how we increase this, how we increasing the sequence, what we get? Here our difference is 1. The difference from first to second one is 1. Here is our difference is 2. And here is our difference is 3. Means we know that this is the difference of it. This is the candies. Difference of what? Candies. So students, we may write this one by this way. We explain these things. Okay, students, we raise. Here we write these things. Here is first term, our 1 plus 0 into D. The next term, 1 plus 1 D. 1 candy. Here is 1 plus 2 candy. 2D. Here is 1 plus 3 candy is added here. 1 plus 3D. Understood, student? Means first term, the coefficient of D is 0. Second term, the coefficient of D is 1. Third term, the coefficient of D is
2. Fourth term, the coefficient of D is 3. Means we write here 1 plus number of term minus 1 into D. Here is 1 plus third minus 1 into D. Okay, is the 1 plus 2 minus 1 into D. That's why. So here the sequence. Now let us take. Okay, we move here. See the things. Understood? So this is the difference between how we write this thing as an example. Let's see. I am arranging here. In the data we take the two sequence. First one is the 1 2 3 4 5. Here is 1 1 2 means 2, 1 2 3 3, 1 2 3 4 5. This is the 1 unit distance, students. So here our D is 0. Then we write first term is always represented by A plus 0 into D. In this A plus 1D. In this A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D. Okay, students. Now see in this sequence our D is equal to what? D is 1. Differences is 1. First to say next difference is 1. Okay, students. Now here is our decreasing sequence. So what we see here? Our first term is 5. Here the first में D is equal to 0. Next में what we observe here? D decreases ना, तो that is minus 1. 5 minus 1 ही तो 4 होगा, तो D is equal to minus 1. तो now our A2 is 5 into 1 multiplied by D. तो 1 into minus 1, D is minus 1, तो 5 minus 1 what happen? 4. D is equal to what? अब इसका फर्स्ट से थर्ड में D कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? 2 का, माइनस 2 का. तो क्या हो जाएगा? 2 into minus 1, 3. Such that. Now students, its application in taking this reverse order difference is one the things. This is the way when we reverse it. Just हम इसे उल्टा कर दें और उल्टा करने के बाद when we paste here, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? द रिवर्सिंग दोनों एक जैसे थे. द रिवर्सिंग हमने ऑर्डर रिवर्स करा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास लेंथ है ये कितना आया? दिस वन 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 एंड 5. तो ये हमारे पास 5 यूनिट का लेंथ आ गया. इस यूनिट को यदि हम देखेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. इसकी लेंथ कितनी हो गई? 6 यूनिट की हो गई. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर इज ऑल्सो 5 and in this side is also 6. Okay student, means it becomes, this is the sequence of 1 to 5, this is the sequence of 5 to 1. When we reverse it and add it, what we get? The rectangular area of the field. That is the application of this sequence. Okay, so by this sequence or reversing the order and adding it, we get the rectangular area of the rectangular figure of it. We explain it. Okay student, this is this application कि by this is everybody's how AP is usable to find the area. By this way we say that the AP is usable to find the area of the things. Okay students, now come on the concept. Now on the basis of all these things, what we draw? The definition of AP, it is a sequence which follow an order. Means एक sequence होगा जो कोई ना कोई order follow करेगा, तो उसको क्या कह सकते हैं? तो हम that particular sequence, चाहे वो increasing way में हो या decreasing way में हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? That sequence is in AP. जैसे आप so many people think like that ना कि how sequence decreases. स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती हैं जिनका डिक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे आज की डेट में हम सभी किस महामारी से फॉल कर रहे हैं? पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है फॉर कोरोना. ये आप देखो, क्या कोई चाहेगा कि कोरोना में जो जितने भी नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो? नहीं होना. जब वो डिक्रीज़ होगा तो हमें
बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का इंक्रीज़ होना, यदि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमें लिए बहुत खुशी मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इंक्रीज़ होना हमारे लिए अच्छा होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका डिक्रीज़ होना हमारे लिए सही रहता है। तो इसीलिए कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, मे बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मे बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नोटेशन ऑफ इट। स्टूडेंट, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जब भी हम एपी के फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो सीक्वेंस द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज said to be represented by a. Okay students, now the common difference, this one, what is common difference? Difference is the a2 minus a1 or a3 minus a2, ऐसा ही सीक्वेंस चल जाएगा। मतलब नेक्स्ट से लास्ट का डिफरेंस, 2 से 1 का डिफरेंस, 3 से 2 का डिफरेंस, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का डिफरेंस, जो भी है, यदि से नेक्स्ट टू लास्ट टर्म, तो उस सारे को हम क्या कहेंगे? यदि वो इक्वल होता है, दैट इज़ द प्रोग्रेसिव, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? दैट पर्टिकुलर, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू consecutive numbers of the sequence. Okay, if the difference between two consecutive number of the sequence is equal, then we say that the sequence is in AP. Otherwise we say that the sequence is not an AP. तो students, we see here 1 2 3 4 5, it's a, हमें पता होता है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट में क्या आएगा? 7 आ जाएगा। तो हमें ये पता है, तो इसलिए हम ये क्या कर सकते हैं? दिस सीक्वेंस इज इन AP। 5 4 3 2 1, हम क्या, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, ये डिक्रीज कर रहा है -1 से, तो हम क्या कर सकते हैं? 5 4 3 1, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? -1, उसके नेक्स्ट क्या आएगा? -2, वी नो अबाउट इट। ओके, तो दैट पर्टिकुलर टर्म इज ऑल्सो इन AP। बट इन नेक्स्ट 1 2 4 5 7 11, आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, नो वन पैटर्न इज देयर, कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा। 1 से 2 गया, 1 का डिफरेंस हुआ, 2 से 4 में 2 का डिफरेंस हो रहा है, 4 से 5 में 1 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 5 से 7 में 2 का डिफरेंस हो रहा है, 7 से 11 में 4 का डिफरेंस हो रहा है। वी डोंट नो व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑफ इट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारा AP का सीक्वेंस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ we write its number of terms. A plus 0 into D is A, is our first term. A plus D, A हम इसको लिख सकते हैं A plus 1 into D, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म। A plus 2D हमारा थर्ड टर्म है, A3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A plus 3 minus 1D। इसको से स्टूडेंट आप लिख सकते हो, दिस वन इज़ योर A1, ये आपके पास क्या हो गया? A2, ये है आपके पास थर्ड टर्म A3, ये आपके पास फोर्थ टर्म A4, और ये जब आपके पास लास्ट टर्म है, ये आपका क्या हो जाएगा? AN, मीन्स AN क्या है? nth टर्म ऑफ एन AP। ओके स्टूडेंट, ट्राई, आई विल ट्राई to explain the things. I hope you learn it and you understand the things. Okay, and now apply to find the or identify the sequence is in AP or not. The sequence may be increasing or may be decreasing. Both the sequence are under observation. Okay students, now go to apply. Thank you.